Assalamu alaikum. You are watching Camcore with Nadia Tahir. Our today's topic is coordination complexes. In this topic, we will study about the coordination complexes, what they are, what are their components, and related terms, and the types of coordination complexes. Okay, what are coordination compounds? Coordination compounds are chemical compounds that consist of an array of anions or neutral molecules that are bound to the central atom via coordinate covalent bond. What it is, ये क्या है? एक array है, arrangement है. किस चीज़ की arrangement? Arrangement of anions and neutral molecules. कहाँ पे? Around the central atom. How they are bound to central atom? Through the coordinate covalent bond. Means कि एक central atom है, इसके around array है, arrangement है anions or neutral molecules की, which are bound via coordinate covalent bond. Coordination compounds are also referred as coordination complexes because they are not simple compounds. Many coordination compounds contain a metallic element as the central atom, or we can say almost all the coordination compounds contain a metallic element as central atom, and therefore these are referred to as metal complexes. Most of coordination complexes में जो central atom है that is a metal, इसलिए हम इन्हें metal complexes भी कहते हैं. Next, we will study about the important terms involving coordination compounds. First term is central atom and central ion. The atoms and ions to which a set number of atoms, molecules or ions are bound are referred to as central atoms and the central ion. वो जो मेटालिक एटम सेंट्रल एटम जिसके साथ दूसरे एटम या ग्रुप्स बॉन्ड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम. इन कोऑर्डिनेशन द सेंट्रल एटम और आयंस आर टिपिकली लेविस एसिड्स. इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? दीज आर लेविस एसिड. लेविस एसिड क्या होते हैं? द स्पीशी विच हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. मीन्स आवर सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स. ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर द कॉम्प्लेक्स cobalt, ammonia 6 and then Cl3 outside the parenthesis. In this complex cobalt, this CO is the central atom. We also term central atom as the coordination center. Second name for the central yes, the second name for central atom is coordination center. Next comes the ligands. Ligands are the atoms, molecules or ions that are bound to the coordination center or central atom or ion. जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके साथ जिन दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस ने बॉन्ड बनाया हुआ है, all those atoms, molecules or ions are known as ligands. In other words, we can say ligands are electron pair donor. They act as Lewis bases. As a Lewis base ये act करते हैं and donate electron pairs to the transition metal ions. Thus, a dative bond is formed between ligand and the transition metal. Dative bond क्या होता है? वही coordinate covalent bond जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरे का पूरा ligand दे रहा है to and it is donating electron pair towards transition metal to form a bond. Because यहाँ पे coordinate covalent bond बन रहा है, that's why these compounds are called as coordination complexes. इस coordination की वजह से coordinate covalent bond की वजह से that is formed
due to the donation of electron pair from ligand towards the transition metal. These are known as coordination complexes. These can be simple, जो हमारे ligands है simple भी हो सकते हैं, छोटे से molecule. For example, chloro है, ammonia है, or these can be large such as ethane 1,2-diamine. What is ethane 1,2-diamine? Let me draw it. Ethane 1,2-diamine. One hydrogen is replaced by amine group and one hydrogen of other is also replaced by amine group. This is ethane 1,2-diamine. Ligands have different types. डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम लिगेंड्स को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप हम स्टडी करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ द लिगेंड. लिगेंड का जो चार्ज है उसकी बेस पे टाइप्स हम देख रहे हैं. फर्स्ट टाइप इज एनायनिक लिगेंड. द लिगेंड दैट display that have a negative charge are called as anionic ligands. For example, cyano, bromo, chloro. Next comes the cationic ligand. In this comes the example of nitro and O positive. Next, neutral ligands. For example, carbonyl, water and ammonia. Second classification of ligands is based upon the binding sites. First one is unidentate. As the uni indicate one, these are the ligands that have one donor atom. That has one atom which can bind. These have one atom that can bind to the coordination center or central एटम. इनके पास एक ऐसा एटम होता है जो कि कोऑर्डिनेशन सेंटर या सेंट्रल एटम से बाइंड करता है. सो दीज आर नेम्ड एज यूनिडेंटेट. फ्यू एग्जांपल्स आर क्लोरो, वाटर, अमोनिया etc. Second type is bidentate ligands. Bi means two. So these are the ligands that have ability to bind to the central atom where two separate donor atoms, or we can say the ligands which have two separate donor atoms are known as bidentate. इनके पास टू डोनर एटम्स होते हैं जिनके थ्रू ये सेंट्रल एटम से बाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल इथेन 1,2-diamine. इसमें हमने इसका पीछे स्ट्रक्चर देखा है. बोथ नाइट्रोजन ऑफ टू अमाइन ग्रुप्स act as donor atoms. Next are the polydentate ligands. Poly means many. So these are the ligands that have many donor atoms that can bind to the coordination center or central एटम. इनके पास बहुत से एटम्स होते हैं, बहुत से डोनर एटम्स होते हैं जिनके थ्रू ये सेंट्रल एटम से सेंट्रल मेटल से बॉन्ड बना सकते हैं. सो दीज आर नेम्ड एज पोलीडेंटेट. These atoms may be 3 or 4 or 5 or 6. They are named accordingly like tridentate, tetradentate, pentadentate and hexadentate. One example is EDTA, ethylene diamine tetraacetate. It is basically a hexadentate ligand and falls under the polydentate type. नेक्स्ट कुछ और लिगेंड की टाइप्स हैं. इट इज़ द कीलेट लिगेंड और समटाइम इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज चीलेट, बट आई विल प्रेफर टू से कीलेट as we say chemistry, so it's chelate. What is chelate? When a polydentate ligand attach itself to the same central metal atom through two or more donor atoms. हमारा जो लिगेंड है टू और मोर देन टू डोनर एटम्स के साथ एक ही सेंट्रल एटम से अटैच हो तो उसे हम कहते हैं कीलेट लिगेंड. इनका सबसे बड़ा साइन क्या है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई
दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर्स, क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल दिस इज एनी लिगेंड, ये इसका फर्स्ट डोनर है और ये सेकंड डोनर है, इन दोनों के थ्रू ये सेंट्रल मेटल से बाइंड कर रहा है, इट विल बी द रिंग स्ट्रक्चर, एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज वी हैव स्टडी 1,2-diamine, ethane 1,2-diamine, it is also a chelating ligand. Next is a term denticity. चेलेट लिगेंड का वो एटम जो कि डोनर है, जो कि मेटल आयन के साथ लिगेट करता है, बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज द डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ आई विल अगेन write the same example, ethane 1,2-diamine. In this case we see from all these atoms nitrogen is the atom that ligate with the central metal. So here nitrogen is the denticity of such ligand, of this ligand. इस ligand की denticity क्या है? नाइट्रोजन है, because it is donating electron or it is ligating with the central metal. Next term is ambidentate ligand. Ambi क्या होता है? Between two states जो exist कर सकता है, in two states in fact के, like we say amphibians in biology. In the same way there is an ambidentate. Some ligands have ability to bind to the central atom via the atoms of two different elements. इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये इनके पास एबिलिटी है कि ये एक एलिमेंट के एटम के थ्रू बाइंड करें या दूसरे एटम के थ्रू बाइंड करें। मींस दे हैव टू ऑप्शंस, दे यूज वन एंड सेव द अदर, एंड और अदर टाइम्स दे यूज द सेकंड वन एंड सेव द फर्स्ट वन। फॉर एग्जांपल SCN हमारे पास एक लिगेंड है, इट हैज़ टू ऑप्शंस, इट कैन यूज आइदर सल्फर और नाइट्रोजन। तो सम टाइम ये सल्फर के थ्रू बाइंड करता है और नाइट्रोजन को यूज नहीं करता बाइंडिंग में, एंड अदर टाइम्स इट यूजेस नाइट्रोजन एंड स्पेयर द सल्फर। सो दिस इज द एम्बिडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट कम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से रिलेटेड टर्म है ये। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम is in the coordination compound refers to what it is, the total number of sigma bonds through which the ligands are bound to the central atom. Total sigma bonds जो central atom ने बनाए हैं, that is called as its oxidation, its coordination number, coordination. For example here is the complex, निकल है और 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, +2 चार्ज है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एज वी कैन सी देयर आर 4 लिगेंड्स, 4 एंड 1 अमोनिया here means 1 ligand form 1 sigma bond, so the coordination number is 1 into 4, 4. coordination number of nickel is 4. हमने लिगेंड देखते हैं कितने लिगेंड हैं और ये लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, लाइक ये, इस एग्जांपल को देखें अगर आप, पैरेंथेसिस में जो चीज़ रिटन है ये ब्रैकेट्स में, दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये इसको आइडेंटिफाई करने का एक मेथड है, अगर रिटन में आपके पास हो। वैसे एक्सपेरिमेंटली हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? Coordination sphere is the non-ionizable part of complex compound or coordinate compound. Non-ionizable part है जो कि ionize नहीं होता. What it is composed of central metal ion surrounded by neighboring atoms or group. Coordination sphere में क्या चीज़ इंक्लूड है? एक तो central metal होगा और उसके बाद ligands होंगे, कोई से भी, कितने भी लिगेंड उसके साथ अटैच हैं। हर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक काउंटर आयन होता है। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज पॉजिटिव चार्ज, काउंटर आयन विल बी देयर
with negative charge. In the same way, if coordination sphere has negative charge, counter ion will be there with positive charge. तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं? इट इज रिटन टुगेदर विद द कोऑर्डिनेशन सेंटर इट्स लिगेंड। जो काउंटर आयन है वो कोऑर्डिनेशन सेंटर और लिगेंड के साथ नेट चार्ज के साथ लिखा जाता है। ये स्फीयर होगा, स्फीयर के आउटसाइड इसे हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है अगेन कोबाल्ट, और फिर उसके बाद हमारे पास लिगेंड है और फिर क्लोरो आउटसाइड अटैच है। तो इसमें जो पैरेंथेसिस के अंदर पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और जो बाहर क्लोरो अटैच है ये काउंटर आयन है। देन कम्स द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन. The geometric shape formed by the attachment of ligands to the coordination center is called coordination polyhedron. Means कि हमारे complex की जो geometry है that is basically the coordination polyhedron. It may be tetrahedral or pentagonal or square planar, any geometry whatever it have. बेसिकली क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट है कि स्पेस में हमारे लिगेंड्स और सेंट्रल एटम किस तरह से अरेंज हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एटम. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द चार्ज एसोसिएटेड विद इट. इसके ऊपर क्या चार्ज है, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ये है कि हमारा जो सेंट्रल एटम है इसके ऊपर क्या चार्ज है. व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर डोनेटेड बाय द लिगेंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट. मीन्स के लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं वी डू नॉट काउंट दैम इन. We see the overall charge on the coordination complex, and using that we find out the charge on the metal, that is oxidation number of the metal. For example, here is the complex platinum hexachloro -2 इस पे चार्ज है. इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना कैसे करेंगे? सिंपल मेथड क्या है, वी राइट x in place of metal. Then we have 6 chloro plus 6, और एक क्लोरो का चार्ज कितना है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है -2. सो x -6 इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4, बिकॉज ये जो -6 है उधर जाके +6 हो जाएगा. इसे हम सिंपली भी कर सकते हैं x -6 इज इक्वल टू -2. ये स्टेप ना करें, एज वी नो Cl हैज माइनस चार्ज, दीज आर 6, सो इट विल बी अल्टीमेटली -6. तो यहाँ से x इज इक्वल टू अगेन 4, +6 हो जाएगा, +6 और -2 विल बी +4. तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं. You need practice to learn how to calculate it. So let's have some practice. I'm going to give you some examples for self practice. It's the positive. It's the first one. And here second one. इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के में आपने निकल और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, एंड देन यू हैव टू कमेंट कि ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. Next comes an important concept about double salt and coordination complexes.
Sometimes it causes a confusion that double salt and coordinate complexes are same or different. If they are different, what is the difference between them? So first we will see what are double salts. Double salts such as potash alum are completely ionizable. ये completely ionizable हैं in aqueous solution. They give ions like potassium, sulfate, aluminium +3 that respond to the corresponding test. This allow us to identify the salt and its components. तो इसमें हमने तीन बातें देखी. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और फिर दूसरी आयंस दे देते हैं. सब आयंस जो हैं वो सेपरेट होके उस एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे. एज ऑल द आयंस आर प्रेजेंट इट इज़ ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स. उसे आइडेंटिफाई करना ईजी होता है. नेक्स्ट कम्स द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. Coordinate complexes are incompletely ionizable. Complete ionization नहीं होती. The part which is present outside the coordination sphere is ionized, but जो inside coordination sphere है वो ionize नहीं होता. They give a completion which doesn't show complete ionization because इन्होंने complex बनाया होता है, उस वजह से ये completely ionize नहीं होते. जो काउंटर आयन है ओनली दैट इज आयोनाइज्ड. एज दीज आर नॉट आयोनाइज्ड they doesn't convert into ion, so we cannot identify their components by simple tests as we can do in the case of salts. For example हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है. ये इसे अगर हम आयनाइज करेंगे तो ओनली पोटेशियम आयन जो है वो सेपरेट होगा. इट विल बी as K plus potassium ion and our anion will be this as a whole. आयरन और बाकी जो 7 ligands हैं वो पूरे के पूरे anion में कन्वर्ट हो जाएंगे. जो cyano है they will not be separately ionized. तो इनकी आयनाइजेशन इनकम्प्लीट है कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से और इन्हें सिंपल टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. Then comes the types of coordination complexes. As we see, there are different type of ligands, different bases to categorize them. In the same way complexes की भी हम different types पढ़ेंगे. Different bases पर types जो है वो इन्हें types में divide किया गया. First of all, charge की base पे है cationic complexes. In this coordination, the sphere is a cation. जो हमारा coordination sphere है, it bears a positive charge. Like we can see Cl has negative charge, so the charge of coordination sphere must be counter, must be opposite to it. It surely have +3 charge. तो जिन complexes के coordination sphere पे positive charge होगा they are cationic complexes. Anionic complexes are those in which the sphere is anion. Sphere पे negative charge होगा. For example, this one. Here we can see simply that outside the sphere is potassium which hold a positive charge. So the sphere must be -1. Then comes the neutral complexes. In this coordination, the sphere is neither a cation nor an anion. ना तो वो cation होगा ना ही anion होगा, but a neutral one.
Next comes types of complexes based upon ligands. First one is homoleptic complexes. As the word homo indicates the term same, the complexes that consist of similar type of ligands, ऐसे complexes जिनमें एक ही तरह के similar type के ligands हों, they are termed as homoleptic complexes. अब तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, दे ऑल वर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. अगेन अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखें इसी को, here you can see there are 6 cyano, 6 ligands, all the ligands are cyano, means all the ligands are similar, so it is homoleptic complex. Second one is the heteroleptic complexes. This consists of different types of ligands. इनमें different तरह के ligands होते हैं. For example, you can see this complex. It has 6 ligands in total, 5 ammonia and 1 chloro. As these are of two different types, so it is heteroleptic complex. इसमें ligands more than 2 types के भी हो सकते हैं. Like this can be 3 type of ligand or 4, but the mixed ligands are rare. In the last, there comes the type of complexes based upon central metal. इस बेस पे टू टाइप्स हैं, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस. Mononuclear complexes are those in which the coordination sphere has a single transition metal. और अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, these all were the mononuclear complexes, और यही कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा कॉमन हैं. Second type is polynuclear complexes. Poly, as the name indicate, many. So these are the complexes which have more than one transition metal present. इनमें एक से ज़्यादा transition metal present होता है, like they have iron and cobalt, or they have cobalt and nickel, इस तरह से. So these are termed as polynuclear complexes. So how was the lecture? Do you understand it? Do you have any questions or any confusion? If you have questions, you can ask in the comment box. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you for watching.